Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to the channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss length contraction and time dilation. Let's begin. Classical physics रे आमे लेंथ एवं टाइम को एब्सोल्यूट कहूथिले किंतु स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट यूज करिकी आमे देखिबा जे लेंथ एवं टाइम एब्सोल्यूट नुहे, लेंथ एवं टाइम रिलेटिव। तबे आमे प्रथम डिस्कशन करिबा लेंथ कंट्राक्शन। Let us consider two inertial frames of reference, गोटे S frame अन्यटी S dash frame, such that S frame is at rest, S frame टी rest रे अछि एवं S dash frame moves with uniform velocity v vector, S dash frame टी with respect to S frame रे v velocity रे गति करूछि, that along positive x axis with respect to S frame along positive x axis, जहाँ हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रे कंसीडर करथिले। लेंथ कंट्राक्शन एवं टाइम डायलेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रो कॉन्सिक्वेंसेस। The frame of reference S frame that S frame is at rest. Another frame of reference which is S dash frame S dash frame जो S dash frame टी with respect to S frame along positive x axis रे यूनिफॉर्म v velocity रे गति करूछि, that v is constant here. दुईटी जांगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Let us consider a rod lying at rest in S dash frame along x axis. मैं गोटे रॉड को कंसीडर करिबा, let this is a rod, जो रॉड टी S dash फ्रेम रे रेस्ट रे अछि, तेबे ए रॉड पाई आमे S dash फ्रेम रे तार कोऑर्डिनेट केते आसीबो, माने ए पॉइंट रा कोऑर्डिनेट x2 डैश, ए पॉइंट रा कोऑर्डिनेट x1 डैश एवं तार लेंथ S dash फ्रेम रे L नॉट। In S dash frame, the length of the rod L0 L naught is equal to, that is x2 dash minus x1 dash, x1 dash ये लेंथ रा परिमाण केते L naught, that is x2 dash minus x1 dash हम पाई जबा L naught वैल्यू।
equation number 1. Similarly, से लेंथ को यदि आम एस फ्रेम रे मेजरमेंट करवा एस फ्रेम अनुजाई तार कोऑर्डिनेट केते आसीबो x1 x2 एवं ए लेंथ टी आसीबो l. Similarly, in S frame, the length of the rod L is equal to, here is x2 minus x1, equation number 2. S dash frame जे कि with respect to S frame रे v यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे x रा पॉजिटिव डायरेक्शन ने गति करछि. ए S dash फ्रेम रे गोटे लेंथ गोटे रड जार लेंथ L नॉट ताको आमे रेस्ट रे रखिचे. तेबे जदि गोटे ऑब्जर्वर S फ्रेम रे रही कि ए रड ऑफ दैट ऑफ लेंथ को ऑब्जर्व करिवो तेबे से केते लेंथ से रड रो ऑब्जर्व करिवो. वर्तमान आमे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करि परिबा. अकॉर्डिंग टू लॉरेंस transformations equations, x1 dash is equal to x1 minus vt1 divided by 1 minus v square by c square under root. यह थिला हमर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. से भली भाव में x2 पई केते आसीबो and x2 dash similarly x2 minus vt2 divided by 1 minus v square by c square under root. तो ये इक्वेशन गुड़ी का वर्तमान आम इक्वेशन 1 रे पुट अप कर दबा. Therefore, equation 1 will be L naught is equal to x2 dash minus x1 dash. L naught x2 dash रो वैल्यू दुईटी जांक टर्म रे हमर कॉमन केते आसीबो 1 डिवाइडेड बाय 1 minus v square by c square under root ब्रैकेट रे x1 minus vt1 minus x2 that is plus vt2. लक्ष्य कर S फ्रेम पाई टाइम S2 फ्रेम पाई टाइम सेम कारण साइमल्टेनियसली एस फ्रेम रे थिबा ऑब्जर्वर जो समय लेंथ को ऑब्जर्व करछि से समय एस डैश फ्रेम रे थिबा ऑब्जर्वर से लेंथ को ऑब्जर्व करछि. ई सिचुएशन पाई टाइम दीटा जांकरे आमे समान नबा. हियर t1 is equal to t2 as time in same instant. ए टाइम t1 इज इक्वल टू t2 हेले ए टर्म कैंसल हो आम पाई L नॉट इज इक्वल टू दैट इज x1 here we have sorry x2
minus x2 dash minus x1 dash, term as x2 t2, here is x1 t1, therefore we have x2 minus x1 divided by 1 minus v square by c square under root x2 minus x1 केते l, ते पाई गले l नॉट इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट। तबे l रो वैल्यू केते आसी जो जानी कि l नॉट टाइम्स 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रो अंडर रूट। ए इक्वेशन में कोन पाउछे एल कौन ना लेंथटा से रड रो जिते बेले कौन गोटे ऑब्जर्वर ताकू एस फ्रेम रे ऑब्जर्व करुची एवं एल नटटा कौन ना से रड रो लेंथ जो रड टी एस टैस फ्रेम रे रेस्ट अवस्था रे अछि एवं एस टैस फ्रेम रे से लेंथ को ऑब्जर्व कले तार लेंथ हेउची एल नट। किंतु हम एक्सप्रेशन अनुसार पाइले जे एल इज इक्वल टू एल नट इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट। तो एथरो हम कोन पाई पारुछे आज 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट यार वैल्यू केते ना ये वैल्यूटी 1 ठारू कम, ये वैल्यूटी 1 ठारू कम ता माने हमें कहि दे परिबा ए जो लेंथ रा अछि से लेंथटा l नॉट ठारू कम, व्हिच इंप्लाइज दैट लेंथ l इज लेस देन l नॉट। ता माने लेंथ एठी कॉन्ट्रैक्टेड हैला एल फ्रेम रे सॉरी एस फ्रेम रे थिबा ऑब्जर्वर टी से रड को एल नॉट ठारू कमी बार देखिबो जानि कि लेंथ इज कॉन्ट्रैक्टेड हियर, हेंस द लेंथ ऑफ द रड in motion with respect to an observer appears to get contracted और ताको मध्य कहि परिबा that is shortened by ए फैक्टर से केते कमिबो 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट फैक्टर कमिबो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन and this phenomenon is called length contraction से प्रकार फेनोमेनन को आम कहि पारुछे लेंथ कंट्राक्शन पाई। आम लेंथ को क्लासिकल मेकानिक्स रे एब्सोल्यूट बोली कहउथिले किंतु एक्चुअली लेंथ रा एब्सोल्यूट नुहे ता बर्तमान रिलेटिव। लक्ष्य कर एई रिजल्टटा केते बेले क्लासिकल मेकानिक्स रिजल्ट सहित समान हेबो जो फैक्टर थला 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट ता माने एठी आमे जो s टेस फ्रेमटा विथ रिस्पेक्ट टू s फ्रेम रे v यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे गति करथिले जदि का ए वेलोसिटीटा सी ठारू बहुत कम हबो लाइट रो वेलोसिटी ठारू आमे जो कांस्टेंट वेलोसिटी रे एसटीएस फ्रेम को गति करूचे ता लाइट रो वेलोसिटी ठारू बहुत कम हबो माने आमे लाइट रो वेलोसिटी संगे ता कंपेयर करि परिबा नाही। तब ए रिजल्ट रो वैल्यू केते हिजबो 1 हिजबो ता माने एल टा एल नॉट सहित समान हेबो जहाँ आमे डेली लाइफ रो ऑब्जर्व करछे लेंथ रो किछि कंट्राक्शन हेउ नाही जेटा क्लासिकल मेकानिक्स रो रिजल्ट। किंतु जेते बेले से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आमे इक्वल टू दैट और नियरली लाइट रो वेलोसिटी संगे कंपेरेबल वेलोसिटी रे गति करूछे लाइट रो वेलोसिटी ठार तो अधिक वेलोसिटी हे परिबनी लाइट रो वेलोसिटी सहित कंपेरेबल वेलोसिटी जदि से एसटीएस फ्रेमटा मूव करे
तो सही केस रे आम लेंथ कंट्राक्शन फेनोमेनन लक्ष्य करिया। नेक्स्ट टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन समयटा से भाव में आब्सोल्यूट नुहे, समयटा मध्य रिलेटिव। केमिति आम लक्ष्य करिया समयटा रिलेटिव बोली। सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस दीटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नवा, गोटे एस फ्रेम अन्यटी एस डैश फ्रेम जे कि भी कन्स्टांट वेलोसिटी रे उस रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रेम रे गति करुछि। तेबे आमे कोन करिवा ना गोटे इवेंट कंसीडर करिवा एस फ्रेम रे, गोटे इवेंट एस फ्रेम रे कंसीडर करिवा जे इवेंट पाई गोटे टाइम ड्यूरेशन रहिबो। सेही भली भाबरे अन्य गोटे इवेंट कंसीडर करिवा एस डैश फ्रेम रे जार मध्य गोटे टाइम ड्यूरेशन रहिबो। तो सेही इवेंट को गोटे ऑब्जर्वर एस फ्रेम रे जदि ऑब्जर्व करे तो दीटा जाक इवेंट रे टाइम रो ड्यूरेशन टा केते ताको आमे कैलकुलेट करिवा। We consider a clock at certain position in S frame so that the time interval between two events is given by del t t2 minus t1। एस फ्रेम रे आम गोटे क्लॉक रखले एवं से मेजरमेंट कला कौन गोटे इवेंट जो इवेंटा एस फ्रेम रे गठित होउची से इवेंट रो टाइम ड्यूरेशनटा केते ना t2 माइनस t1। गोटे इक्वेशन दे दो, दैट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली in S dash frame the time duration of an event is S dash frame पाई से इवेंट रो टाइम ड्यूरेशन मन कर t2 डैश माइनस t1 डैश। एस फ्रेम पाई से इवेंट रो टाइम ड्यूरेशन डेल टी, एस डैश फ्रेम से इवेंट रो टाइम ड्यूरेशन डेल टी डैश। एस डैश फ्रेम टी विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम रे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस रे गति करुछि। तेबे एस फ्रेम रे थिबा ऑब्जर्वर टी जितेबाला एस डैश फ्रेम रे गठित होउथिबा इवेंट रो टाइम को मेजरमेंट करिवो तेबे ताको टाइमटा कोन ऑब्जर्व हो सेटा बर्तन आमे कैलकुलेट करिवा। तेबे एठी मध्ये आमे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करिवा। अप्लाइंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस टाइम पाई t1 डैश इज इक्वल टू केते आसीबो ना t1 माइनस vx1 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट and t2 dash that is t2 vx2 c square divided by 1 minus v square by c square under root। तो ये दुटा इक्वेशन हम इक्वेशन 2 रे पुट अप कर दवा। देयरफॉर equation 2 will be del t dash is equal to t2 dash minus t1 dash। therefore del t dash is equal to common आसीबो 1 minus b square by c square under root t2 dash that is t2 minus vx2 c square minus t1 plus vx2
सॉरी Vx1 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। तो हमें डेल t1 सॉरी डेल t डैश केते पाई जिबा अन्य गोटे पॉइंट को हमको लक्ष्य करिया पड़िबो से जो एस फ्रेम रे से क्लॉकटा सेम पोजीशन रे अछि ता माने x1 टा x2 सहित समान। हियर x1 is equal to x2, that is the clock at the same place। से कारण এই टर्मटा कैंसल हो जिवो हम पाई जिवा केते ना t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट, अर्थात डेल t डैश इज इक्वल टू t2 माइनस t1 डेल t time duration of that of event which occurred in S frame divided by 1 minus v square by c square under root माने इथरा में डेल t रो वैल्यू केते पाई जिबा बे डेल t is equal to del t dash 1 minus v square by c square under root। ये जो वैल्यूटी आमर थिला 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट से वैल्यूटी एक ठारू अधिक sorry that value is less than 1, that value is less than 1। तबे हमें कहि दे परिबा del t is less than del t dash। से जो टाइम ड्यूरेशन एस फ्रेम रे थिबा व्यक्तिटी बा एस फ्रेम रे जे व्यक्तिटी ऑब्जर्व करथिबो एस डैश फ्रेम रे गठित होउथिबा इवेंट रो टाइम ड्यूरेशन थारु कम हेबो माने ताकू लागिबो जे टाइम टा डाइल्यूट होछि धीरे गति करूछि। हम एतरु कोन ऑब्जर्व कले हेंस to an observer in motion relative to the clock, the time intervals appear to be dilated और ताऊ कहि परिबा lengthened। For this reason this phenomenon is called time dilation। से कारण से फेनोमेनन को आम कहूचे टाइम डाइलेशन अर्थात समयटा धीरे जाउथिबार ऑब्जर्व करबा के जदि से ऑब्जर्वरटा एस फ्रेम रे थाए से एस फ्रेम रो टाइम ड्यूरेशन टा कम लागिबो कंपैरिजन टू दैट ऑफ एस टेस्ट फ्रेम रे थिबा टाइम ड्यूरेशन थारु। सेम थिंग आम क्लासिकल मेकानिक्स रे जदि क तार वेलोसिटीटा लाइट रो वेलोसिटी संगे कंपेरेबल नुहे तो ए फैक्टरटा वैल्यूटा इक्वल टू 1 हे जिवो
डेल टी डी सहित सामान हो क्लासिकल मेकानिक्स रिजल्ट रे किंतु जेहेतु आम रिलेटिविस्टिक कनसेप्ट यूज करुचे एस डैश फ्रेम टू विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम रे मूव करुची एवं से वेलोसिटीटा कार लाइटर वेलोसिटी सागर कंपेरेबल आम देखुचे जे टाइमटा डाइल्यूट हो टाइम डाइलेसन तेणुक लेंथ एवं टाइम एब्सोल्यूट नुहे लेंथ एवं टाइम हूँ रिलेटिव क्वांटिटी सो with the help of this video lecture we understand the concept of length contraction and we prove it by using special theory of relativity and Lorentz equations. Again the concept of time dilation, time is diluted by using special theory of relativity. These two are the consequences of Lorentz transformation equations. So with this useful and informative notes, let me wind up the session. Thank you.